चलो, so in this session we will start with the operators of Python. So in this session we will be covering what are the different operators that are supported by Python. Right. So first thing, what is an operator? What are operators? Operator, it is nothing but it is a symbol or a keyword. Operator is nothing but it is a symbol or a keyword which is used to perform some specific task. Okay, in order to perform some specific task, we'll be using the help of some symbols, we'll be using some keywords. So keywords और symbols use करके हम लोग कुछ specific operations हम लोग perform करते हैं. So हर एक programming language, different programming languages supports different operators. Right, different programming languages support different operators. So कौन सा ऑपरेटर्स को सपोर्ट करेंगे पाइथन सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. उसमें फर्स्ट वन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स. आफ्टर लॉजिकल we have bitwise operators. Assignment operator. Assignment operators. Conditional operator. Condition operator. And then special operators. So in special operators, we have two types of operators. Identity operators then membership operators. So these are the different types of operators supported by Python. So arithmetic operators में कौन सा रहेगा? Addition, right? Addition, subtraction, multiplication, division, and modulus, percentile. So apart from these arithmetic operators, Python also supports two different types of operators: double star, double slash. Okay, double star represents power operator, double slash represents floor division operator. Okay, double star used to represent power, double slash it is used to represent floor division. Right, next one, relational operators are greater than, less than equal to, greater than equal to, double is equal to, and not equal to. Double is equal to and not equal to. So relational operators also called as comparison operators. Right, relational operators also called as comparison operators. So after relational, the next type of logical operators that we have are लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन सा रहेगा? एंड और नॉट. नॉट के बाद और कुछ है? नहीं. सो पाइथन सपोर्ट्स ओनली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स: एंड, और, एंड नॉट. सो आफ्टर लॉजिकल वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स. सो बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या क्या रहेंगे? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और,
bitwise not, bitwise XOR, right? Bitwise XOR, then left shift and right shift. So these are the operators that are supported by Python. So after bitwise operators, next one, assignment operator. We have only one assignment operator, which is equal to, is equal to. This is the only assignment operator that we have. Next one, conditional operator. Next one is conditional operator, which will contain if condition, sorry, it will be value if condition, else value, else value 2. So starting में value 1 if condition, else value 2. So next again in special operators, what are the different special operators? Identity and membership. In identity, is not. So we have two different operators, is and is not. And in membership operators, in, comma, not in. So these are the different types of operators that are supported by Python. So now let us start with the first one, arithmetic operators. Arithmetic operators. So arithmetic operators तो already हमको पता है. What is the use of arithmetic operators? Arithmetic operators are used to perform arithmetic calculations. Arithmetic operators are used to perform arithmetic calculations. Mathematical calculations perform करने के लिए use होगा. Like addition, subtraction, multiplication, division, and remainder. Right. So इसमें addition, subtraction के अलावा we have two more operators. ठीक है, plus means addition, ये तो सबको पता है ना. Everybody knows plus means addition, which will give us the sum of two values. Minus subtraction, minus means subtraction. Then star, which will be used for multiplication. Then slash, used for division. Used for division. तो यहां तक हमको पता है. One more thing is slash. One more thing is slash. Slash means percentile, which is used to give us the reminder. ठीक है, रिमाइंडर डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है. परसेंटाइल का बात छोड़ दो. So let us remove this part. ठीक है, रिमाइंडर. एंड यहां तक हमको पता है. बट हियर in Python we have to note one thing, that is whenever we are doing the normal division, if I am using normal division, the result will always be in floating point format. The result will always be in float format. मतलब पॉइंट फॉर्मेट में ही आउटपुट आएगा. भले आप दोनों प्रॉपर नंबर्स लो या आप दोनों ऑड नंबर्स ले लो या इवन नंबर्स ले लो, या परफेक्ट डिवाइड होने दो या नॉर्मल डिवाइड होने दो, every time you are going to get the result in decimal format. For example, if we see here, so I'm taking two values, so x is equal to some 24, y is equal to some 12. These are the two values. So what I want to do, I want to perform addition, print of x plus y. आप ऐसे करो, नहीं तो sum is equal to x plus y, ऐसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. And then display the sum here. Then display the sum here. Okay, display the sum here. You can do in this way, or directly you can add the values here, x plus y. Both will be giving the same result. So sum हमने
वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल को प्रिंट किया है। सो सब्ट्रैक्शन हम लोग डायरेक्टली कर देंगे। सो प्रिंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लीकेशन मीन्स x into y, प्रिंट ऑफ डिविजन, तो x by y. So whenever we are doing this division part, so multiplication, subtraction, addition के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. So print of the sum of values is sum, difference of values is multiplication of values is, and then division of values is, division of values is. So whenever we are doing the addition part, the result we are going to get here will be 36. Subtraction जब करेंगे, the result will be 12, 24 minus 12, 12, right? What is the result of 24 into 12? 24 into 12, आंसर कितना होगा? So 240 plus 48, it should be 288, बराबर? 24 into 10, 240 plus 24 into 248, so 288. So the division you are going to get x by y. तो इन जनरल हम अगर करते हैं x by y करेंगे तो 2 आएगा. But in Python, whenever we are doing the normal division, so this is actually called as true division. Normal division नहीं है, इसको हम लोग true division बोलते हैं. So whenever you are doing the true division part, the result you are going to get will be in decimal format. It will be looking like this, 2.0. Now you can see, save this one and just run this one. The sum of values 36, so 12, 288 and 2.0. सबके सब बराबर आ गए. But every time if I am getting the result in floating format, it will be little bit problematic. वो हमारे लिए problematic होता है. Because sometimes we need to consider only integer values. If the result I am going to get in decimal values or float values, it will be problematic for us. So इसलिए in Python what we have is, if I want to get the result in integer format, अगर हमको integer format में result चाहिए, then we cannot go with this true division values. So true division नहीं करने का. So if you want to get the result in integer format, instead of true division we go with floor division. ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंटर के बाद डबल स्लैश acts as floor division. ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या करेंगे? If both the numerator and denominator, both are integer values, definitely you are going to get the output in integer format only. ठीक है, definitely we are going to get the result in decimal format only, मतलब integer format. अभी देखो 2.5 आएगा, sorry 2 आएगा instead of 2.0. This time you are going to get directly 2. So this is the what output that we are expecting. And sometimes what happens is, अगर मैं ये लेता हूँ 18 दिया, so if I go do the normal division, 24 divided by 18, what is the result we are going to get here? So this is the correct one, 1.33333, right? 1.3333 is the result that you are going to get if you do the normal division. But when you do the floor division, अगर यही वैल्यूज के ऊपर अगर आप फ्लोर डिवीजन अप्लाई करते हो, ये पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज होंगे, all the values will be removed. It will not consider the point values. Directly हमको output 1 आएगा. Here you will be getting the output as 1. Now save this one and run this one. अभी इसको रन कर दो. Division is 1. So floor division, mostly आपको output
हमेशा इंट फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करेंगे। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस है, यहाँ पे दोनों इंट में क्यों आ रहा है आउटपुट, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर इन इंटीजर फॉर्मेट, दोनों की दोनों वैल्यूज इंट फॉर्मेट में है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दैट आई एम हैविंग ए वैल्यू लाइक दिस 24.8, y is 18, x is 24.8. Here x is a float value, y is an int value. X is a float value and y is an int value. The result you are going to get here in Python will be int float output. अभी दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर में आउटपुट आया, दोनों में से एक, राइट, दोनों में से एक float value निकला, the entire result will be in float, but the output will be like this 1.0. It is not going to print you the actual value, it will convert the result into float, मतलब 0.0 add होगा. Now if you see this one, simply run this one, save the program and run this one, you are going to get the output like this, right? You are going to get the output like this, right? जो भी रिजल्ट हमको आता है उसको 1 ऐड होगा बस, राइट? जो भी रिजल्ट हमको आएगा उसको 1 ऐड होगा. तो फ्लोर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन का डिफरेंस समझ में आया क्या? Okay, so next one, after floor division and normal division, there is one more operator that we have, which is double star. Double star acts as power operator. Okay, double star acts as power operator. So if I am directly taking like this, print of अभी 18 double star 2, 18 double star 2 मतलब 18 square, the output you will be getting here will be 324. 18 square will be 324, correct, right? तो आप चेक कर लेंगे, so which will be 324. अगर 3 करते हो 320, नहीं तो हम लोग 10 पावर 3 कर लेंगे, 10 पावर 3, it will be easy for us to calculate. 10 power 3 will be 1000. Now save this one and run this one, आ गया 1000, right? So this is how we can use double star operator and double slash operator. डबल स्लैश अगर दिखेंगे तो आपको फ्लोर डिवीजन की तरह कंसिडर करने का, सिंगल स्लैश अगर दिखता है तो ट्रू डिवीजन होगा, राइट? दिस इज विथ अवर operators, arithmetic operators. So after arithmetic operators, the next one that we have is comparison operators. Sorry, just a second. In arithmetic operators हम लोग किस लिए यूज करते हैं? arithmetic operators are used to perform arithmetic operations. numbers के साथ कुछ operations perform करने के लिए यूज करते हैं. But out of these arithmetic operators, there are two operators which we can use to apply on the strings. String के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? Two operators we can apply even with the strings. Strings नहीं है, sequences का साथ कोई भी sequence आप consider कर लो. String के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, list के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, tuple के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो. So two operators we can go with sequences also. We can use with sequences also. So what are those two operators? Plus and star. Okay, plus and star. So if I am using plus with the characters or strings, string type की values के साथ अगर plus use कर रहा हूं, so plus will be acting as concatenation operator, not addition operator. Concatenation operator. Concatenation means it simply combines both these strings as a single string. It simply combines two different strings as a
single string. Second one is star. Star operator, if I am using between two different operators, दो operators के बीच में, sorry, दो string values के बीच में star अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो star acts as repetition operator. Star acts as repetition operator. So, but if I want to use plus or star with strings or sequences, there are some conditions. String के साथ अगर मेरे को strings के साथ अगर concatenate करनी है, plus use करना है, या strings के साथ हमको number star use करना है, there are some conditions. So if I am adding two values like this, s is equal to a plus b. a plus b अगर add concatenate करना है, in case if I want to concatenate two values, a must be, sorry, a not only a and b must be of string data type only. A and b must contain the values from string data type only. Must be of string type only. So अगर एक variable string निकला, if I am considering a as string and b as non-string value, you will get type error. हमको type error आता है. You will not be able to add or you will not be able to concatenate a string type value with a non-string type value. For example, यहाँ पे अगर आप देखोगे, so I am considering x is equal to evening. ठीक है, x is equal to evening and y is equal to 18. Sum is equal to, नहीं तो s is equal to x plus y. ठीक है. Now if I remove this one, if I try to print this one, after concatenation of values, concatenation of values is comma s. Concatenation of values is s. This will be giving us an error. ये हमको error देगा. You are going to get type error. Cannot concatenate string with int. ठीक है, can only concatenate string to string but not integer. Because 18 is integer, x is string. So if I want to concatenate two things, so both the data types must be of string type only. Y is equal to, I'm taking class. ठीक है, स्पेस देके क्लास इसलिए दिया है कि दोनों वर्ड्स का डिफरेंस आ जाए, दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस आने का. So the output you are going to see here will be evening space class. This is the output we are going to get now. Now save this one and run this one. So concatenation of values is evening class. ठीक है. So दो वैल्यूज को अगर मुझे concatenate करना है, if I want to concatenate two different values, then both the values must be of same type. अभी यहाँ पे string और string को किया था हमने, यहाँ पे string और string को किया था. नेक्स्ट वन मेरे को लिस्ट और लिस्ट को भी कर सकते हो आप. I can do the same with list also. I'm having a list like this: 10, 20, 30. So I'll be having another list. I'm having another list A, B, and C. A, B, and C. So what I'm doing here? अभी L is equal to x plus y. Just ऐसे वेरिएबल चेंज किया. It's not mandatory कि आपको भी वेरिएबल चेंज करनी है. Right? L is equal to x plus y. Now print of concatenation of values. नहीं तो concatenation of lists is L. So output will be 10, 20, 30 ABC. तो 30 के फर्स्ट के बाद बाकी का तीन एलिमेंट्स ऐड होगा. 10, 20, 30 ABC. This is the output you are going to see. अगर हम लोग टाइप चेंज करेंगे, if you try to change the type, तो y का वैल्यू मैं 12.3 दे रहा हूँ, 12.3. So again you are going to get an error. Okay, again you are going to get an error. Cannot concatenate list to float. Can only concatenate list to list. Same data type values को हम लोग concatenate कर सकते हैं. Right, same data type values को हम लोग
कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो आफ्टर कंकैटिनेशन नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन ऑपरेटर, स्टार ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर, इट विल सिंपली रिपीट द नंबर ऑफ अकरेंसेस यू वांट। अभी मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के 2 बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार रिपीट करना है, 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 300 बार रिपीट करनी है, 300 बार हम लोग रिपीट कर सकते हैं। So if I want to repeat 2 values, one value must be integer, the other value must be string or any sequence. लिस्ट को भी आप रिपीट कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी आप रिपीट कर सकते हो, बाद में क्या है, टपल के लिए भी आप रिपीट कर सकते हो। अभी a इंटू बी, अगर मैंने ये किया, ये मस्ट बी इंटीजर, नहीं तो a और b दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, अगर ये इंटीजर हो गया, b नॉन इंटीजर हो सकता है, नहीं तो ये अगर नॉन इंटीजर हुआ, b इंटीजर हो सकता है। ये मस्ट बी इंट टाइप, वन वैल्यू आपका इंट टाइप होना चाहिए। इफ ये इंटीजर हो गया, देन b मस्ट बी नॉन इंट टाइप। अगर ये चेंज करेंगे तो वापस हमको एरर आएगा। ठीक है, ऐसे लिखने की जगह एक काम करेंगे, ए और बी, ए और बी शुड बी इंट टाइप, the other should be non-int type, the other should be non-int type. Done. So अगर हम लोग ये वाला रूल अप्लाई नहीं किया है, you are going to face errors, हमको एरर्स आएंगे। अब ये देखो, लिस्ट है मेरे पास and y is equal to, I am doing it as 3. I just want to repeat this list 3 times. मतलब now the result that I am going to get here, x into y, L is equal to x into y. Repetition of list. So 10 20 30 10 20 30 10 20 30 आपको 3 बार आएंगे ऐसे। Our elements inside the list will be repeated 3 times. Right? देखो 10 20 30 10 20 30 and 10 20 30। अगर ये गलती से हम लोग, अगर यहाँ पे z मैं डिक्लेयर करता हूँ, z इज इक्वल टू, नहीं तो ऊपर ही डिक्लेयर करो, ऐसे कुछ ये नहीं है, चलो यहीं पे डिक्लेयर कर लेंगे। z इज इक्वल टू मैं करता हूँ तो 20, नहीं तो 2। So z is of string type, right? z is of string type. मेरे को क्या करना है, s is equal to x into z करनी है। x is of list type, y is of, sorry, z is of string type. Now you will not be able to do the calculation. So if you try to print this one, print of s, you will get an error. Okay, cannot repeat list with, cannot multiply sequence by non-int type. ठीक है, नॉन इंट टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग है। पहले हमने x लिया था, x is list, that is a sequence. str is also, z is also a string, it is also a sequence. तो दो नॉन इंट टाइप वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसको कर देते हो, दोनों इंटीजर्स होंगे तो मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करेंगे। दोनों अगर इंटीजर्स होंगे तो मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करेंगे। दोनों में से एक इंटीजर और एक सीक्वेंस हो गया, देन रिपीटिशन की तरह काम करेंगे। अब x एंड टू z कर दो, 10 20 30 2 टाइम्स आएगा, 10 20 30 2 टाइम्स डिस्प्ले हुआ। क्लियर? So this is with our arithmetic operators inside Python. ठीक है, arithmetic operators in Python.